Hello everyone. So previously we have discussed about the data types in Python, different data types like mutable and immutable, and conversion of data types. And we have also seen the concept of comments in Python, single line command and double line command, sorry, multi-line commands. So yeah, in this lecture we are going to cover operators in Python, operator precedence, and the operations that we are going to discuss are the arithmetic operations, relational operations, logical operations. So this is the session 5 of our Python course series. So yeah, let us continue with this now. So let us start with operators and operators precedence. Before moving on to them, I will tell you the basic idea of operators. So for example, in small classes, you have seen 5 plus 4 is equal to 9. So in this simple example, this plus sign is the operator, this 5 and 4 are the operands, and this 9 is the result. And this complete expression में operation perform हो रहा है addition का operation. Is it? So I hope that this basic example have cleared you the concept of operators. If it is not clear, then you can take, I can give you another example of 5 multiply 4. Similarly, here this multiply sign is the operator, 5 and 4 are the operands, this 20 is the output. So now let us discuss the operations in Python. We are going to cover 3 operations: arithmetic operations, relational operations, and logical operations. So yeah, let us start with the arithmetic operations. So these are similar to the operations that you have seen in your basic maths. Yeah, basic maths. So let us see each operation one by one, and then we will move on to the VS Code to see their practical example. Now this unary plus is similar to the positive integers like plus 5, plus 4, plus 2, and so on. This binary plus is a plus b, like 5 plus 4, as I have shown you in the previous example. Now you will confuse कि यार हमें कैसे आइडिया लगेगा कि यार बाइनरी प्लस है या फिर यूनरी प्लस है, सिंस सिंबल तो एक ही है. यार सिंपल सी बात है, अगर मैं लिख देता हूँ +5, देन आपको आइडिया लग जाएगा कि यार यूनरी प्लस है. अगर वो दो नंबर्स के बीच में है लाइक 5 + 4, देन दिस इज बाइनरी प्लस. एंड इन पाइथन अगर आप लोग सिर्फ सिंपल 5 भी लिखते हो ना यार, देन पाइथन को आइडिया होता है कि दिस इज अ पॉजिटिव नंबर. सो बेसिकली हमें पाइथन को बताने की जरूरत तब पड़ती है व्हेन वी नीड टू राइट -5. देन वी नीड टू यूज यूनरी माइनस, लाइक -5 नेगेटिव इंटीजर्स. एंड अगर दो नंबर्स के बीच में है देन इट वुड बी बाइनरी माइनस. This star operation is the multiplication, like 5 star 4 will be 20, as we have seen in the previous example. Now this division 5/4 is a float division. Now what is this float division यार? इसका मतलब होता है यार, यहाँ पर रखा मैंने 5, यहाँ रखा 4. नाउ अनटिल एंड जब तक ये जो रिमाइंडर है 0 नहीं आ जाता, 4 से डिवाइड करता रहेगा. 4 1 द 4, रिमाइंडर आया 1, देन पॉइंट, देन आया 0, देन 2. सो या I got 1.2 here. So this is float division.
सो फ्लोट डिवीजन में हमेशा जो है हमारा जो आउटपुट है वो हमेशा फ्लोट नंबर आएगा, यानी कि डेसिमल नंबर आएगा। अगर इन केस वो पूरा डिवाइड भी हो जाता है, लाइक 10/5, 10/5, इन दिस केस रिमाइंडर इज 0 एंड क्वोशंट इज 2, देन स्टिल आपका आंसर कैसे आएगा? 2.0, यानी कि आंसर फ्लोट में ही आने वाला है। अगर रिमाइंडर था तो वो पॉइंट डेसिमल लेके जैसे आप डिवाइड करते थे वैसे हो जाएगा, वरना यहाँ पे 2.0 लगा देगा, 0.0 लगा के उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। So these are simple operations. So I am going somewhat fast. I hope you are getting the idea of all these things because these are very basic things. Now this modulo A modulo B gives you the remainder when A is divided by 5. Like if I do 10 modulo 8, then the remainder will be 2. So answer will be 2. So similarly, now moving on to the next operation. Now double slash, yeah. Here we have discussed the single slash. The answer was in float. The double slash also give us the quotient like the single slash, but the answer is in the int. Like if I do 5/4, 5 double slash 4. So this time the answer will not be, yeah, 5/4. So I felt I have done the mistake in that question. Wait a minute. Yeah. So अगर हम लोग 5/4 करते हैं, 4 1 4, 5/4 1, I give the point here. Remainder is 0. 4 2 are 8. Yeah, 2 and again यहाँ पे 5 आ जाता है since यहाँ पे 0 आएगा. So in the case of 5, in the case of 5 single slash 4, the answer will be 1.25 in float. I felt previously I have done some mistake. So please ignore that since it is a mathematical mistake. Now 5 double slash 4. This will give you only the integer part 1. I hope this is clear to you. This give answer in float. This give answer in integer. Only integer part it has given to you here. So yeah. I hope the concept is clear to you. So don't go on the maths. Maths आप लोग कर सकते हो यार. हमसे एरर हो जाता है कभी कभार प्रेशर में. So yeah. Let us see the next arithmetical operator. यार एरर आप लोगों को ना बेस्ट कंटेंट देने में हो जाता है कभी कभार. बेस्ट कंटेंट देने का हमारा कोशिश होती होती है, देन उसमें कभी कभार एरर हो जाता है. सो प्लीज इग्नोर दैट. सो यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A double star B? It means A raised to the power of B means it will be equal to A की power B. So like 4 double star 2 अगर मैं कर देता हूँ, then it is 4 की power 2 which is equal to 16. Is it clear to you? So let us try all these operators, arithmetic operators on VS Code. So yeah, let us try them. Now added A is equal to 4, B is equal to 5. I did print A plus B. Now again I did print A minus B.
I did print A, where is yeah, print A star B. I did print A exponentiation B, A to power B. Now I did print A single slash B, print A double slash B. Then I did print A, yeah, moduli B. So what we are expecting for this? We are expecting for A plus B, we are going to get 9. A minus B, yani ki 4 minus 5, we are expecting minus 1. Into B, we are expecting 20. Now for A to power B, 4 to power 5, what we are expecting for the 16, it's 256, 256 into 4. How much it is? Yeah, it is around 1024. So for A single slash B, yani ki float division. Why I am saying float division? Because this is division. Because this is division. And answer of this will be in float. So yeah, what we are expecting for it, yeah, we are expecting 0.2. Sorry, yeah, 0.8. Because when we will divide 4 by 8, the 4 when we will divide 4 by 5, then the quotient will be 0.8. Now in A double slash B, the quotient, the output will be the integer part of the quotient, which would be 0 in this case. नाउ ए मॉड्यूल बी रिमाइंडर क्या आने वाला है अगर हम लोग 4 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं. सो आई विल शो यू दिस. अगर हम लोग 4 को 5 से डिवाइड करते हैं, 4 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ऐसा आप लोग कुछ करेंगे. सो रिमाइंडर विल बी 4 ओनली. इज इट? हम लोग डेसिमल के बाद नहीं जाएंगे. आपको आइडिया होगा कि अगर आप किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हो, देन जो रिमाइंडर है वो छोटा नंबर ही आने वाला है. इज इट? आई होप यू नो दिस मच मैथ्स. So here the answer should be 4. So let us try this. Run this code. See, we have got 9. We have got minus 1. We have got 20. We have got 1024. We have got 0.8. We have got 0. We have got 4. So let me give you another example if this thing is not clear to you. Let me take A is equal to 10. And let me take B is equal to 8. So in this case, addition will be 18. 10 minus 8 will be 2. 10 into 8 will be 80. And A ki power B will be equal to 1 and followed by 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now A single slash B will be the quotient. The quotient will be 10 by 8. So it would be 1.25. You can check by dividing 10 by 8. The quotient will be this only. Now the integer part of the quotient will be 1. Now remainder when you will divide 10 by 8 is 2. So let us run this code. Yeah. You can check that we have got the expected output.
So now we will move on to the relational operators. So I hope these arithmetic operations are clear to you. They are very much similar to the operations that we used to perform in maths. So nothing, I felt nothing new is there in this. बस आपको ये symbols को identify करना है that this is for multiplication, this is for float division, this is to get the remainder, this is for the integer division, and this is for the exponentiation, is it? So बस symbols आपको identify करने हैं and बाकी तो maths है यार. So yeah, let us move on to the relational operations. So यार रिलेशनल ऑपरेशंस क्या होते हैं? हम लोगों ने इन द प्रीवियस केस दो वेरिएबल बनाए थे ए एंड बी, उन्हें वैल्यूज असाइन करी थी. सो रिलेशनल ऑपरेशंस इनके जो ए और बी है दोनों का रिलेशन चेक करने के लिए होते हैं. नाउ आई विल टेल यू वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट इन द initially I have told you three operations that we're going to learn. जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं दे गिव अस द वैल्यू, हमें एक वैल्यू मिलती है. मैथ्स के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं एंड हमें वैल्यू मिलती है. रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस में द आउटपुट इज ऑलवेज आइदर ट्रू और फॉल्स. सो आई वांट टू टेल यू दिस थिंग. सो लेट अस सी कि कैसे होता है. आई हैव शोन यू द अरिथमेटिक ऑपरेशंस, वहां पर हमें वैल्यूज मिल रही थी. एंड रिलेशनल ऑपरेशंस में क्या होगा, रिलेशन चेक होगा. And the first operator is double equal to. So single equal to क्या होता है ना यार, जब हम लोग करते हैं a equal to 2, then आप single equal to is used for the assignment that we have covered earlier, is it, that we have covered earlier in this course. So yeah, that is for the assignment. हम लोगों ने a को 2 वैल्यू असाइन कर दी थी. बट अगर आप ऐसे करते ए इज डबल इक्वल टू 2, देन इसमें क्या होता, पाइथन समझ जाएगा कि यार अभी रिलेशन चेक कर रहे हो. सो इस रिलेशन में क्या चेक करता है पाइथन, व्हेन यू डू ए डबल इक्वल टू बी, देन पाइथन इक्वल टू इक्वालिटी चेक करता है. ये आपको ट्रू रिजल्ट में देगा अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल है, एल्स ये आपको फॉल्स दे देगा. आपने ए डबल इक्वल टू 2 लिखा, देन अगर ए की वैल्यू 2 है तो पाइथन आपको ट्रू रिजल्ट देगा, एल्स आपको फॉल्स दे देगा. सो यहाँ पर ए को 2 की वैल्यू असाइन नहीं होगी, जस्ट ये इक्वालिटी चेक करेगा बिकॉज इट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, इज इट. सो सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू के लिए. this is न- this is the operator for not equal to. If you will write a, this operator, and b, then it will give you true if a is not equal to b, else it will give you false. This operator is opposite to this operator. इन दोनों जो operators है इनका function opposite है. ये दोनों ही इक्वालिटी चेक करने के लिए है, बट अगर इक्वालिटी है दोनों में देन ये ट्रू देगा, एल्स ये फॉल्स देगा. ये भी इक्वालिटी चेक करेगा, लेकिन अगर इक्वालिटी है तो ये फॉल्स देगा, एल्स ये आपको ट्रू देगा. सो दोनों ऑपरेटर्स है तो इक्वालिटी चेक करने के लिए ही, बट ये इनका जो आउटपुट है वो वाइस वर्सा है, इज इट. ये ट्रू दे रहा था पहला वाला ऑपरेटर अगर दोनों इक्वल है, एंड अगर दोनों इक्वल है तो दूसरे वाला फॉल्स दे रहा था. अगर दोनों इक्वल नहीं है तो पहले वाला फॉल्स दे रहा था, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो दूसरे वाला ट्रू दे रहा था. तो दे आर परफॉर्मिंग द अपोजिट टास्क, इज इट. नाउ द थर्ड ऑपरेटर दैट वी हैव इज लेस देन और इक्वल टू. If I not equal to, it is only less than or equal to is the fourth one. So if I write a less than b,
then it will give me true if A is less than B, else it will give me false. If I will do A less than or equal to B, then it will give me true if A is less than or equal to B, else false. Now greater than, if I will write A greater than B, then it will give me true if A is greater than B, else false. Similarly, if I will do A greater than or equal to B, then it will check equality with the greater than also. It will give me true if A is greater than or equal to B, else it will give me false. So yeah, now let us run this code on VS Code. Now let me do is A equal to B. Here I am going to check no, not equality. Now here I will write is A greater than B? Is A less than B? Greater than or equal to? And less than or equal to? Is A less than or equal to B? So I felt I have write all the operators here. Yeah, there are 6 relational operators that I have written here. So what we are expecting here now? Print A is equal to B. What you are expecting here? What I am expecting is false. Why false? Because A is equal to 10 and B is equal to 8. So how 10 can be equal to 8 यार? Is it? आप समझ पा रहे हो यार? 8 10 जो है 8 के इक्वल नहीं है. Then it will give me false. So it is checking not equality. It is reverse of this operator. So यहाँ पर हमें क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये कह रहा है कि क्या ए बी के इक्वल नहीं है? Yes, A is not equal to B. Then we are going to get true here. Now let me do the third case, that is print A is greater than B. Yeah, A is 10, A is 10 and B is 8. So yes, A is greater than B. So I'm going to get true here. So yeah. Now A is less than B. No, A is not less than B. So here we having false here. Is A is greater than or equal to B? Yes, A is greater than B. A is greater than B, so I'm going to get true here. I'm going to get false here. Why false? Because this is asking is A less than or equal to B? See, 10 is not equal to B, not equal to B, and not less than B. So here we will be having false here. So let me check this by running the code. Yeah, false, true, true, false, true, false, false, true, true, false, true, false. So we have verified all these things. So I hope the concept of relational operators are clear to you now. So let us move on to the next part, which is, yeah, before moving on to the next part, I want to tell you one important thing, that checking equality for the floating points number can cause some problem. Like 1.1 plus 2.2 is equal to 3.3 जब आप लोग चेक करोगे, then पाइथन आपको फॉल्स देगा. या आई अंडरस्टैंड कि यार जब हम लोग मैथ्स में करते हैं आप लोग करोगे यार 1.1 और 2.2 तो 3.3 के इक्वल होता है, बट पाइथन फिर फॉल्स कैसे दे सकता है? सो इसका रीजन ये है, इन पाइथन दीज फ्लोटिंग नंबर्स आर स्टोर्ड एज द बाइनरी फ्रैक्शंस. I tell you what are binary fractions, like 0.001 है.
सो आप लोग क्या करते हैं यार, आप लोग इसे जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस है इसके नीचे आप लोग 10 लगाते हो, देन इसके नीचे आप 100 लगा के इसे ऐड करते हो, देन इसके नीचे 1000 लगाते हो। बट बाइनरी फ्रैक्शंस में क्या होता है, हम लोग फर्स्ट डेसिमल प्लेस के नीचे 2 लगाते हैं, सेकंड के नीचे 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 3 लगाते हैं, इज इट। देन हम लोग जो डेसिमल फ्रैक्शन था उसका हम लोग बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, बाइनरी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, एंड वो पाइथन स्टोर करता है। So if this reason is not clear to you, then you don't need to worry because that is not useful for you now. But आप इतना समझ लो कि कभी अगर आप लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए इक्वालिटी चेक कर रहे हो, then you need to be careful, false आ सकता है। So this result is useful for you. The reason is not that much useful, but अगर आपको रिजल्ट जानना ही था, then I have give you the hint for that. But the result is more important for you. Now I will show you this in the VS Code. Since यार इंटीजर जो है वो तो प्रिसाइजली स्टोर होते हैं पाइथन के अंदर, बट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिसाइजली स्टोर नहीं होते हैं। In the simpler language, if I will say this, that I have said कि यार इंटीजर्स प्रिसाइजली स्टोर होते हैं, बट फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर प्रिसाइजली स्टोर नहीं होते हैं पाइथन के अंदर, इज इट। सो लेट मी शो यू दिस। प्रिंट 1.1 plus 2.2 is equal to 3.3. I'm checking equality here. So let me check this. Yeah, first I will clear the previous output. So I got the false here. So the reason is same as I've told you earlier. But अगर आप लोग 3.3 यहाँ पे डाल देते, सो अब तो यार आपने डाल ही सेम वैल्यू दी, इस केस में तो सिमिलर आएगा क्योंकि या 3.3 एंड 3.3 आपने खुद लिखा है, तो दोनों सिमिलर वे में स्टोर होंगे। बट 1.1 और 2.2 का एडिशन सिमिलर वे में स्टोर नहीं होगा क्योंकि पाइथन उनसे डील कर रहा है, इज इट। सो इन दिस केस यू विल गेट ट्रू। अगर आप लोग डायरेक्टली दोनों खुद ही लिख देते हो और तब चेक करते हो, इज इट। लेकिन अगर आप लोग कुछ ऑपरेशंस के थ्रू 3.3 तक पहुंच रहे थे, लाइक आई हैव रीच बाय 1.1 एंड 2.2, देन यू आर गोइंग टू गेट द फॉल्स मोस्ट प्रोबेबली। So checking equality for the floating points number doesn't make any sense due to the reason that I have told you. I am again repeating that this thing is very important because कहीं कोड में अगर एरर आ रही है आपकी एंड आप लोग इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, then maybe the reason can be this. So this result was useful, not its reason. So yeah, move on to our third part, that is logical operations in Python. Yeah, so logical operations in Python. So what are logical operations? There are three logical operations that Python provide to us. First is not, second is or, the third one is and. So what is this not doing us? First, we will understand or and, then I will take you to the note. So यार what is happening in no, अगर आप लोग दो चीजें लिख रहे हो एंड अगर आप उनके बीच में और डाल रहे हो, अगर उनमें से कोई भी चीज ट्रू है, कोई भी चीज अगर ट्रू है तो आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, एल्स फॉल्स आ जाएगा अगर एक भी ट्रू है। नाउ आप यहाँ पे दो की जगह आप कितनी भी मतलब आप लोग कितने भी एक्सप्रेशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई टेक 5 I take 5 expression, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं इन सबके बीच में और डाल देता हूं, या अगर इन सबके बीच में और डाल देता हूं, और अगर इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन इवेलुएट्स टू बी ट्रू, देन आपका जो फाइनल आउटपुट है दैट विल बी ट्रू। अगर कोई भी ट्रू नहीं है देन फॉल्स। इन द सिमिलर मैनर, अगर यही मेरे पास 5 एक्सप्रेशन है एंड अगर मैं इनके भी सबके बीच में एंड डाल रहा हूँ, आई एम पुटिंग एंड इन बिटवीन ऑल ऑफ देम, यहाँ भी एंड, यहाँ भी एंड, यहाँ भी एंड यहाँ भी एंड। सो इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर
ये चारों ट्रू है, अगर ये पांचों ट्रू है देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट ट्रू। इट मीन्स एंड में सारे ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू आएगा, एल्स फॉल्स आएगा। और में अगर कोई एक भी ट्रू है तो चल जाएगा, इज इट? सो और में अगर कोई एक भी ट्रू है तो चल जाएगा। एंड कहता है कि ऑल नीड टू बी ट्रू, सबको ट्रू होना चाहिए, इज इट? सबको ट्रू होना चाहिए। सो वी विल सी दिस इन द VS कोड इन अ while. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नोट। सर नोट का क्या मतलब होता है? अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन था तो नोट क्या करता है, उसको लॉजिकली रिवर्स कर देता है। यानी कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू आ रहा था, आप लोग नोट एक्स लिख दोगे, देन आपका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स इवेलुएट होता, इफ दिस इवेलुएट्स टू बी फॉल्स, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स इवेलुएट होता एंड अगर आप नोट एफ लिखते तो आपका आउटपुट ट्रू आता। सो इट बेसिकली रिवर्स द सेंस ऑफ एक्स, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। सो लेट मी do this and perform this in the VS code. So yeah, let me go in the VS code and let me copy some example from the slides itself. See, slides क्या आपके लिए छोड़ देते हैं, कुछ नई एग्जांपल्स लेते हैं। So if I will do print not 5 greater than 3. See, 5 greater than 3 का क्या मतलब, क्या आउटपुट आना चाहिए? It should be true. First, I will show you this. So let me move note from here. Now I am running this code, removing previous outputs. Yeah. So here we have got the true here because 5 is greater than 3. Now when I will write note here and rerun this code, then I got false. See, earlier I was getting true and now I am getting false. Why? Because यार ये true था, note ने ये जो true को false कर दिया. Is it? So या अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2. See, now 2 greater than 3 is false, but note लगा हुआ है तो आंसर true आएगा हमारा. Is it? So let me check this. Yeah, true आ रहा है. So now let us see about let us see for the OR operation. 2 greater than 3 or 5 greater than 10, or you can take as many as number of expressions there, but सबके बीच में आप लोगों को और डालना होगा. Is it? So what we can take 5 greater than 2. So see, 2 greater than 3 is false, 5 greater than 10 is false, but 5 greater than 2 is true. सो एक ट्रू है बाकी सारे फॉल्स है, लेकिन और ऑपरेशन है तो यार एक ट्रू होगा तब भी चल जाएगा, कम एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए, एटलीस्ट वन। तो हमारा जो और ऑपरेटर है वो हमें ट्रू देगा। इफ आई विल रन दिस कोड आई गेट ट्रू हेयर, इज इट? बट अगर मैं यहीं पर एंड लगा देता, इफ आई पुट एंड हेयर एंड देन इफ आई रन दिस कोड देन आई गॉट फॉल्स, बिकॉज यार एंड में सारे के सारे ट्रू होंगे देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट ट्रू। बट यहाँ पर यार दो तो फॉल्स थे, सारे तो छोड़ो यार, दो तो फॉल्स थे तीन में से। सो सारे ट्रू नहीं थे, एक इनमें से अगर एक भी फॉल्स आ गया एंड में तो यार एंड फॉल्स दे देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इज इट? So yeah, these are the logical operations, not or and.
At the end of at the end of the operations part, we will see some examples. We'll see some more examples. Yeah. So operators precedence बेसिकली ये क्या होती है यार, अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर आपके पास है एट अ टाइम, so I need to connect my laptop to the charging, so wait a while, wait, you need to wait for a while.